बरदई जी के सामने गौरी से वो हारा था, लेकर तीर कमान फिर गौरी को उसने मारा था। अजमेर से आया था, दिल्ली की वो शान था, 12वीं शताब्दी का वो राजा पृथ्वीराज चौहान था। चांद बरदाई composed Prithviraj Raso, an epic poem in Hindi about the life of Prithviraj Chauhan from 1149 to 1192 CE, was a Rajput king of the Chauhan dynasty who ruled the kingdoms of Ajmer and Delhi in northern India. गजनी पर कब्जा गौरी करके आया था, इब्न सूरी का बदला लेकर घर से आया था। कुतुबों को हराने वाला गजब वो सुल्तान था, दे दी दिल्ली ऐबक को अजब उसका दान था। मोहम्मद गौरी took the city of Ghazni in 1173 to avenge the death of his ancestor Muhammad ibn Suri at the hands of Mahmud of Ghazni, and used it as a launching pad for expansion into northern India. In 1206, Muhammad Ghauri, having settled the affairs in India, left all the affairs in India in the hands of his slave Qutubuddin Aibak. Construction of Qutub Minar was started in 1192 by Qutubuddin Aibak. 10वां राजा कुतुबों का खोया था जब जाम में, खिलजी सैनिक राजा हो गया दिल्ली की उस शाम में। रतन सिंह को कैद कर लिया, चित्तौड़गढ़ पर वार हुआ, 1300 में खिलजी को पद्मावती से जब प्यार हुआ। Alauddin Khilji's attack on Chittor in 1303 CE to capture the queen of Chittor, Rani Padmavati, the wife of King Rawal Ratan Singh, and the subsequent story have been immortalized in the epic poem Padmavat, written by Malik Muhammad Jayasi. Courts to the east of Kuwat ul Islam Mosque in Qutub complex, added by Khilji in 1300 CE. Alauddin's Madrasa, Qutub complex Mehroli, which also has his tomb to the south. गुजरात की चाहत में खिलजी ने चढ़ाई कर दी, बदला लेकर खुसरो ने तुगलक से लड़ाई कर दी। 1398 में तैमूर ने कमजोर किया, तुगलक सारे खत्म हो गए, खिजर खान ने रोर किया। खुसरो खान got Sultan Khilji killed by his friend Jahiriya. In 1320, Khusro Khan managed to kill Alauddin Khilji's son, Sultan Qutbuddin Mubarak Shah, ending the Khilji's dynasty. He was defeated and killed by Sultan Tughlaq, who founded the Tughlaq dynasty in 1320 in Delhi. Wazirabad Mosque near Delhi was built during Firoz Shah Tughlaq's reign. सईद ने जब दिल्ली छोड़ी 1443 में, लोधी वंश तब शुरू हुआ 1447 में। बहलूल का मकबरा चिराग दिल्ली में बना, इब्राहिम को जब तख्त मिला बाग दिल्ली में बना। सईद डायनेस्टी was established by Khizr Khan of Sayyid dynasty, deputized by Taimur to be the governor of Multan, Punjab. Khizr Khan took Delhi from Daulat Khan Lodi on May 28, 1414 and founded the Sayyid dynasty. 1526 में मर गया इब्राहिम लोदी, बाबर की सेना ने खत्म कर दिया वंशीय लोदी। मुगल काल की दिल्ली का बाबर वो सुल्तान था, पानीपत में जीत गया जब वक्त वो बलवान था। Ibrahim Lodi was the last ruler of the Lodi dynasty, reigning from 9 years between 1517 until being defeated and killed at the Battle of Panipat by Babur's invading army in 1526, giving way to the emergence of the Mughal Empire in India. His tomb is often mistaken to be the Sheesh Gumbad within Lodi Gardens of Delhi.
लिख दी हमने ये कविता दिल्ली के इतिहास पर, वर्मा की कलम चल रही दिल्ली के विश्वास पर। शहर में अब विनाश ना हो, उम्मीद यही बस करता हूँ, दिल्ली में बस खुशियां आए, दीद यही बस करता हूँ। This poem of 500 years of Delhi's history was written by Puneet Verma in November 2014.